Hi students, welcome back to the channel. So in this video, we will be discussing about HTML image tags. So this tag is very important and most commonly used tag in every programming language and in every website. So in this video, I will tell you that how you can use image tag, what are its attributes and how to use these attributes. So first of all, we will start with basic introduction part. I will tell you what is image tag, how we can write these tags. After that, I will tell you practically that how you can run these tag in Notepad++ and in any browser. So let's move to the introduction part. So as you can see here, this is how we write image tag. Okay. So we only need to write img here. This is the tag. And this tag is does not have any closing pair. ठीक है, सो इस तरह से इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है. सो दिस इज हाउ इमेज टैग वर्क्स. The img tag is used to embed an image in an HTML page. So if we talk about HTML, CSS, JavaScript, PHP and any other programming language, we always use this image tag if we want to upload any photograph of any size, any image of any height or width. So images are not technically inserted. Remember this statement. Whenever we visit any website or any web page, images are not technically inserted there as we upload photos in Facebook or any other social media. Images are not actually uploaded like this in web pages. Okay, so we always need to use image tag if we want to upload images. Images are linked to web pages. Okay, this is how we link the images. The image tag creates a holding space for the referenced image. So if I want to hold any space for any particular image, so always use image tag. But इस तरह से सिर्फ img लिख के image upload नहीं हो सकती. So here we have the syntax of image tag is img src is equals to its image URL. So what does it mean is img means image, src here means source, and img URL means address of that particular image that you want to upload. Okay, we always paste here the address in between double inverted commas. Remember this point. Okay, कुछ भी वैल्यू हमें कुछ भी एट्रीब्यूट में वैल्यू हमें अपलोड करनी होती है, so we always use double inverted commas. So this is how we write any image tag. So let's move to the practical section. So I have already written this basic structure of HTML. This is the title. So here we can use is img is equals to, अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ तो कोई भी वैल्यू नहीं होगी. Just wait. This is img. Save img dot html. Save this, and when we run this particular section, this is how it comes. So यहाँ पे हमने जो टाइटल दिया था वो आपको नजर आ रहा है, इमेज टैग. यहाँ पे ये जो टाइटल दिया था इमेज टैग, अगर मैं इसको इमेज टैग्स कर देती हूँ, so you can see here the difference. And in a particular screen, this is the main body. From this white area, you can see this white area, this is the body section. And यहाँ पे body section में हमने अभी तक सिर्फ image tag लिखा है. अभी तक कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा because इस तरह से image tag को यूज नहीं किया जाता. So now I will tell you how you can write this image tag. img src is equals to inverted comma start, inverted space, inverted comma close. Now in between these inverted commas, we need to paste the address of that particular image that we want to upload. Suppose I have this one image img1, right? I want to upload this image through HTML tag. So what we need to do is right click on this image, go to properties. In properties section, this is location. Okay, so what we need to do is just wait a second, just copy this location and paste it here.
सो दिस इज नॉट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द इमेज। जैसे कि हम अगर किसी को पोस्ट करते हैं कुछ भी, तो हम क्या लिखते हैं, पहले उनका एड्रेस लिखते हैं, आफ्टर दैट हम वहां पे उनका पर्टिकुलर सिटी का एड्रेस, हाउस नंबर लिखते हैं। सो दिस इज जस्ट द एड्रेस ऑफ देयर सिटी। अब यहाँ पे कभी भी हम यूज करेंगे तो यू कैन सी इन ई ड्राइव आई हैव वन फोल्डर HTML। तो ई ड्राइव के अंदर HTML के अंदर हमें जाना है, सो अगेन वी यूज दिस स्लैश। आफ्टर दैट copy the name of this image, copy, that is img1, paste here, right? This is the name of the person, for example this is name of the person जिसको आप लेटर भेज रहे हो। अब डॉट के बाद हम क्या करते हैं, जैसे HTML लिखते हैं मीन्स एक्सटेंशन ऑफ फाइल वी नीड टू ऐड। सिमिलरली हियर वी हैव टाइप ऑफ फाइल, जिसमें यहाँ पे लिखा है .png, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर फाइल बिलोंग्स टू PNG फैमिली। इस तरह से वी नीड टू राइट द प्रॉपर एड्रेस। सेव दिस प्रोग्राम and refresh, so you can see the result. Here we have the image, right? If you want to add another image, so always use BR tag, that means break row or break rule. Again you need to write img tag, okay? After img src is equals to, यहाँ पे एड्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा एड्रेस। यहाँ पे suppose we have this another image, that is HTML5, and I want to upload this file. Again properties पे जाना है, img2.png, okay? I'm just using this same address, क्योंकि हमारी इमेज जो है ये वाली सेम ही एड्रेस पे है। So just copy paste .png, save this program and then run this program. So you can see the difference, you can see the results, ठीक है? So just use BR here, save and then refresh, right? This is how we can use this image tag with src. Src is one of the most commonly used attribute of image. Without this source attribute, image tag is nothing. It does not work at any condition without src source tag, source attribute, right? Now we will discuss some other attributes of image tag. First is source, that specifies the path of the image. Next we have is alt, specifies an alternate text for the image if the image for some reason cannot be displayed. Okay, we will use this after some time. Now we need to use height and width. This is very important. So you can see here in this example, this is how we use width and height. Okay, so write it here. So write it here, height, height is equals to, so here in this example मैंने directly 42 लिखा है, but कई बार सिस्टम इस तरह से इसको नहीं समझ पाता कि what is 42. So we will try this first. Height is 50. Let's save and run the program. So here you can see height is 50 now. So इसने automatically width भी 50 उठा ली है. That's why we always need to use both the things. ठीक है? So width is equals to 100. Let's just save this and refresh. So this is how it works, right? So यहाँ पे 50 and 100 क्या है? These are the pixels. So I hope you know what is the meaning of pixel. So these are the pixels. Suppose I write it 500 when I refresh this page. So this is how it runs. Okay, so width 800, run this program. Okay, so I hope जो भी मैंने आपको बताया है आप यहाँ पे समझ चुके हो, ठीक है? यहाँ पे if I write height is equals to 20% and width is equals to 50%. Save and just run this program.
सो यहाँ पे आप देख सकते हो 30% एंड 50%. सो विड्थ हियर इज 50%. दैट मीन्स हमारे प्रोग्राम ने क्या किया, ये जो व्हाइट स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये दिस इज 100%. इसकी यहाँ से यहाँ तक विड्थ 100% है एंड 50% हमने सिलेक्ट किया, तो इसने स्क्रीन का 50% एरिया कवर किया. दिस इज हाउ इट वर्क्स. 50% एंड 500 पिक्सल्स. इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया पिक्सल्स के साथ कैसे काम करना है एंड इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया परसेंटेज के साथ कैसे काम करना है. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. So this is how we always use image tag. So I hope you understand everything. So thank you so much for watching this video.